So I will discuss about the whole detailed architecture of the chorus. So what there's in left side we have a simple request and the right side we have a pre-flight request. Now I will tell about what is a simple request is doing and what is the free flight request is doing. So that I will tell about this. Okay. In simple request, what happens is that browser sends a normal HTTP request directly to the server, okay, which is a get method we are using. So what is a get method? So get method is used for the getting the data from the application. So condition for the simple request क्या हो रहा है कि method is a get post or a head and header are the standard and content type is like application type, text plain or the application like anything URL encoded, that is if other condition may browser is skips pre-flight request. Okay. On what is on the server response, what the server does, what the server does is server response it, okay, process the request and send the response with the chorus header. Example like access control origin example.com. So this is my origin, that is example.com. Okay. So what is browser behavior? Browser say chorus headers. If the origin match, response is allowed. If not, then response is a block. So this is the whole process for the simple request. Server still send the data, but browser block the access to the JavaScript. Okay. सो की पॉइंट इससे ही क्लियरली इज इन सिंपल रिक्वेस्ट में क्या होता है कि द ब्राउजर डायरेक्टली टॉक टू द सर्वर विद नो परमिशन चेक बिफोर दैट. So before that there is a no permission check in the browser that whether it is from the valid source or not. Okay. In right side what is there? In the right side there is a pre-flight request. So what is the right side is saying that this shows the pre-flight chorus request which happens when the request is unsafe or the complex. So HTTP is working with the local one and all this thing. Okay. So pre-flight request क्या होता है? Before the actual request, the browser send the options resources or the another.com. It is here we are saying. So this is a pre-flight. Why does browser does this? Method is a put. So currently we are using the method put or the custom header is used or the authentication header is a present. Browser is asking that server, are you okay with this request? So it is asking the server that whether are you okay with this request or not. So server check the chorus rule. So what the server check the chorus rule, that whether this another .com origin has been allowed or not. Is this origin or allowed or the method is allowed. So we are checking that it is put method is allowed or not, or the origin from the another method other .com has been allowed. If allowed, then it will be respond with the access control another like this one origin another.com and the put response or the authentication it is. If actual request is a post now put, now the browser send the request in the real time. Okay. Important क्या चीज़ यहाँ पर important है? This request is sent only in the pre-flight exit if the flight file the request is never sent. अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ें फेल हो जाती हैं तो ये यहीं से रिक्वेस्ट फेल कर देगा. What is the server response in the full? Server process the request and send the response. Then recheck the chorus header, allow the JavaScript to access only if the header is matching. अगर हेडर मेरा मैच करता है तब उसी के बेसिस पे ये रेस्पॉन्स को प्रोसीड करेगा. तो प्री फ्लाइट इज जस्ट लाइक आस्किंग द परमिशन बिफोर एक्चुअल टचिंग द डेटा. तो ये सिंपल वर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे वो चेक नहीं करता कि कहाँ से आ रहा है, कौन सा ओरिजिन है, ये चीज़ को नहीं चेक करता. बट प्री फ्लाइट में क्या होता है कि जब एक्चुअल डेटा को हमको एक्सेस करना है तो उसके पहले हम लोग क्या करता पड़ता है कि परमिशन लेना पड़ता है. तो आस्किंग द परमिशन, तो ये सब चीज़ें ये कोरस में होती है. तो अगर मैं बात करूँ कि सिंपल और द प्रीफाइल रिक्वेस्ट में अगर बात करूँ तो जैसे ऑप्शंस कॉल होता है तो इसमें ये सिंपल नहीं होती. इसमें क्या होती है सिंपल. कौन सा फास्टर है बोले तो क्या सिंपल रिक्वेस्ट क्या होता है थोड़ा फास्ट रहता है, और ये क्या होता है कि स्लाइड स्लो होता है. स्लाइड स्लो इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारी कंडीशनल चेकें बैठी हुई है. मेथड इसमें भी गेट मेथड कर सकते हैं, पोस्ट मैसेज कर सकते हैं. तो ये सिंपल रिक्वेस्ट में हम लोग ये चीज़ करते हैं. लेकिन जब हमको कोई चीज़ में पुट करना है, डिलीट करना है या फिर अपडेट करना है तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग कहते हैं प्रीफाइड रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं. सिक्योरिटी कौन सा होता है ये इसमें देखो, इसमें ये सब चीज़ें चेक नहीं कर रही है कि मेथड कौन सा रीजन है या फिर गेट करने का ये सब.
तो मेनली थर्ड पार्टीज APIs वगैरह में ये सब यूज़ होते हैं। तो ये क्या होता है कि सिंपल रिक्वेस्ट होती है जिसमें क्या होता है सिक्योरिटी भी बेसिक्स होती है, लेकिन ये चीज़ क्या होता है इसमें डेटा मैनिपुलेट होता है। डेटा मैनिपुलेट मतलब होता है डेटा अपडेट होता है या फिर डिलीट करते हैं, तो इसे स्ट्रिक्ट होता है। हेडर्स होती है, जो हेडर्स होती है इसमें स्टैंडर्ड होती है, इसमें कस्टम ऑथेंटिकेटेड रहता है। तो जिसमें एक हम लोग हेडर भेज देते हैं नॉर्मल, तो हेडर के बेसिस पे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। बट इसमें क्या होता है कि हमको एक ऑथेंटिकेटेड या फिर कस्टम वो चीज़ों को डेटा को ऑथेंटिकेटेड डेटा को भेजनी पड़ती है, जो कि अलाउ करे उस पार्टिकुलर पर्सन को या फिर यूज़र और क्लाइंट को जहाँ से ये रिक्वेस्ट आ रही है।